Hi, welcome to my channel and welcome to yet another episode of my first solo international trip. And today I'm going to Lake Thun. So stay with me. तो अभी मैं क्रीन्स में हूँ and I'm waiting for the bus to Lucerne and then Lucerne से मैं इंटरलेकन जाऊँगी. अगर आप इंटरलेकन में रुके हो तो it's good for you, but then I'm staying with a couchsurfing host. So the place is in fact very good away from the city and you have a wonderful view of mountains. So anyway, so I'll go to Lucerne station, वहाँ से ग्लेशियर एक्सप्रेस लूँगी and it will take up about 2 hours to reach Interlaken and वहाँ से we will take the boat ride. हाय, तो अभी मैं लूसन आ गई हूँ एंड यहाँ से ना एवरी 1 आवर इंटरलेकन एक्सप्रेस लूसन इंटरलेकन एक्सप्रेस मिल जाती है. तो अपेरेंटली आई मिस्ड इट. 10:06 पे थी एंड मैं 10:09 पे पहुँची हूँ भागते भागते. वो कब लेट इन द मॉर्निंग. तो अभी वेट करना है. अराउंड मेरे पास कितना टाइम है, ऑलमोस्ट 1 आवर है. तो तब तक मैं लिवसन में I'll walk around or maybe sit near the lake. And this is Lucerne Lake. It's beautiful, right? So yeah, let's go find a place. Hi, तो मैंने अभी इंटरलेकन एक्सप्रेस ले लिया एंड इट इज गोइंग फ्रॉम लूसेंट टू इंटरलेकन. अभी स्टार्ट नहीं हुई है. कीप यू अपडेटेड ऑन द जर्नी एंड yeah, it's going to take almost 2 hours, I think. So मैंने सुना है this is one of the most scenic trains. So let's see what it gives us. And मैं इंटरलेकन तक जा रही हूँ. उसके बाद वहाँ से I'm going to take the boat ride. तो मैं इंटरलेकन पहुंच गई हूँ एंड इट टुक मी अराउंड 2 hours एंड क्या सही जर्नी था ना यार. वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटिफुल ट्रेन्स आई एवर हैड. वन ऑफ द क्या यार, पहली ऐसी ट्रेन लिया मैंने लाइफ में. कितना सही व्यू था पूरा. इट वाज सो प्रेटी. तो अभी नाउ आई एम हेडिंग टू इंटरलेकन सिटी एंड वहाँ से मुझे लेक थून के लिए क्रूज़ लेना है. तो दैट इज़ ऑल्सो इंक्लूडेड इन द स्विस ट्रैवल पास. आई मीन मैं जो भी सारी अभी तक मैंने जितना भी एक्सप्लोर किया है इट इज़ ऑल इंक्लूडेड इन स्विस ट्रैवल पास. सॉरी, ट्रेन आ रही है. हेलो, लेट मी फिगर आउट कि अभी आगे कहाँ जाना है. हाय, तो अभी मैं जहाँ पहुँची थी वहाँ से मुझे इंटरलेकन वेस्ट जाना है. इट्स जस्ट 1 hour अवे. सो वहाँ से मैं इंटरलेकन वेस्ट आ गई हूँ एंड दिस इज़ द बोटिंग डॉक. सो हियर आई एम गोइंग टू चेक दैट नेक्स्ट बोट कब है, कितने बजे है एंड आई विल वेट फॉर इट. सो यहाँ से हम लेक थुन जाएंगे.
look at the color of water. It's so blue, and I'm just loving the boat trip, and it is totally worth it. And it is also part of Swiss Travel Pass. So I'm about to reach my next destination. And yes, we have finally made it to the beautiful Lake Town, Spiez. Let's see what we can do here. Just let me get out and show you around. Hi, so अभी मैं पहुंच गई हूँ स्पीयर्स एंड यहाँ पे आई स्पेंड सम टाइम एंड लास्ट बोट इंटरलेकन की 4:30 बजे है तो आई टेक दैट और इधर आई गो बाई ट्रेन और समथिंग एंड नाउ आई एम हियर एंड गोइंग टू एक्सप्लोर दिस ब्यूटीफुल टाउन. So this is Spiez town. बहुत ज़्यादा तो कुछ करने के लिए नहीं है यहाँ पे, but the town is really peaceful and beautiful, and you can spend time at the lake. There are a lot of beaches, like the lakeside beaches, where you can take a dip, chill over there. But since I'm in no mood to take a dip, and secondly I am not carrying extra clothes, so yeah, I'll just roam around a bit, and it's already evening, so I'll start heading back in some time. I hope you enjoyed the video, and if yes, don't forget to subscribe to my channel, and you can hit me back all your queries in the comments. तब तक के लिए see you in the next video, and next video is going to be really amazing because I'm going to cover an amazing and exciting place. So see you there.